निफ्टी की बात करते हैं, दैट इज योर एक्सपर्टीज, बॉलीवुड नहीं। मैं समझ गया, सॉरी टू पुट यू ऑन अ स्पॉट। लेकिन चक्री, बाजार में वैल्यू इमर्ज होना शुरू हो गई है क्या आपके हिसाब से? I know in particular sectors, yes. For example, information technology. If you look at Infosys, it's made a 52-week low. Multiples are very low. Earnings growth is actually higher from the previous pre-pandemic. I think this is देखा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन आप राइट बिल्कुल बिल्कुल आप बात पूरी करें चक्री, you were saying something. No. So I think, for example, all export-related sectors like information technology, textiles, because US is still in a fine shape, even though with all the confusion, the earnings growth for these companies will be stronger than pre-pandemic, and the multiples are actually kind of in line to lower with pre-pandemic. So which builds the case that these stocks will actually do well in the coming year. चक्री, गुड आफ्टरनून। प्रियंका यार, ये जो अब बात हो रही है लगातार कि बाजार अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स को भी देखेगा क्योंकि अब सेकंड क्वार्टर के नंबर्स शुरू हो जाएंगे। क्या ये बड़े ट्रिगर्स हैं जिसके चलते आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अंडरटोन है, जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है, वो इतनी स्ट्रांग है? क्योंकि Q1 ने भी बहुत अच्छा सरप्राइज किया था। कैसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? दिवाली तक नए हाइस की बात की जा रही है और इनफैक्ट इसी साल के अंत तक भी, दिवाली के बाद भी इस साल के अंत तक भी बड़े हाइस की इंडेक्स पे बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स। क्या आपके लिए बड़े ट्रिगर्स हैं जिन्हें आप वॉच आउट कर रहे हैं? I think two things. One is some select pockets. Agar you look at FMCG, consumer durables, these sectors will do well. Retail will do well. On the other hand, corporate capex kind of companies, industrials, their commentary will kind of slightly be muted. Very simple reason, but very powerful reason, which is working capital and borrowing costs is a very big component. Until they know the peak of interest rates, they won't indulge in new capex. So, and therefore their outlook will be kind of more cautious, whereas FMCG has already done the heavy lifting, and therefore whatever incremental adds to the bottom line will be operating margin expansion. Absolutely. Chakri, hi, good afternoon. जहाँ पर हम sentiments और triggers की बात कर रहे हैं, एक तो फेड अनाउंसमेंट के बाद सेंटिमेंट्स में काफ़ी हद तक कह सकते हैं वॉलेटिलिटी नजर आई और इसी हफ्ते के अंत में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अनाउंसमेंट्स भी आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस जिस तरह से फेड के थे उसी तरह से आरबीआई के एमपीसी से भी है। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर? I think interest rates, for one, of course, 50 basis points is almost in the bag. Second is the bigger issue is what is the peak of the US interest rates, because the interest rate differential, the real interest rate differential between US and India cannot be beyond a certain band. So if US doesn't top out, then India will have to continue to increase interest rates, otherwise it will lead to a weakness of currency. I think this is the catch-22 game that we will have to wait and watch. So until then, broader market may be sideways, but specific like information technology, chemicals, FMCG, these sectors will do well. Right. Reliance Industries आप काफी स्ट्रांगली, आप काफी क्लोजली देखते हैं चक्री, इस समय किस तरह की चीजें आपको नजर आ रही हैं? एक तो अभी एक रिसेंट ग्लोबल रिपोर्ट आई जिसमें एनर्जी पार्ट ऑफ द बिजनेस, न्यू एनर्जी पार्ट ऑफ द बिजनेस को पहली बार वैल्यू मिलना शुरू हुई 10 बिलियन की। 100 रुपए ऐड किया टारगेट में, कुछ 3100 के टारगेट्स आने लगे। दूसरा भाव अभी 2400 पे, क्या ये बहुत अट्रैक्टिव जोन में है अभी? I think Reliance is in a very attractive zone. If you look at the narrative for Reliance Industries, the new energy business, like you rightly pointed out, is not being given as much importance as it should be. And that one is not just 100 rupees. I think the figure will be multiples of that, much higher, 300, 500, if you fast forward another 2, 3, 4 years. So I think Reliance Industries is a 3,500 plus stock in about 12 to 18 months. And all its underlying businesses, whether it's telecom, oil to gas, retail, name it, they're all doing very well. And new energy will be the big catalyst for Reliance Industries for many years to come.
चक्री, एक और सेक्टर, क्योंकि कई सारे सेक्टर्स की जहाँ बात हो रही है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन में यूरोप क्राइसिस के चलते, यूरोप +1 थीम के चलते स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल को भी एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा इंडियन मेकर्स को। और अब तो कई सारी कंपनियां हैं, इनमें स्पेसिफिकली जैसे आरती इंडस्ट्री की बात करें, वो तो अब कैपेक्स भी अनाउंस कर रहे हैं अपने केमिकल बिजनेस के लिए। आप इस स्पेस में अगर आप एनालाइज करते हो तो आपकी इसमें प्रिफर्ड पिक क्या होगी? In chemical industries, it's a very interesting space because Europe's problem can be beneficial to companies like UPL Limited, Deepak Fertilizers, and all agrochemical-based companies. Because ammonia production companies, Europe produces about 10 to 20% plus of the world ammonia production. So even some percentage of that is impacted because of high gas prices. Those volumes, maybe over 10-20% of Europe's production, can shift very easily to ammonia-based production companies. So PI Industries, UPL Limited, Deepak Fertilizers. These companies, I think, are very well placed to take immediate market share. चक्री, थैंक्स फॉर दैट। हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपना आउटलुक मार्केट पर और मैक्रो फ्रंट पर हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ मार्केट के दिग्गज लगातार जुड़ते हैं और बाजार पर अपनी फंडामेंटल एनालिसिस